Good morning, student. Myself Amarjeet Kumar. We are going to discuss about cardiovascular disease manifestation and pathophysiology. Under cardiovascular disease, we are going to discuss about hypertension. Before hypertension, we can needy of discussion blood pressure. What is blood pressure? Blood pressure क्या होता है? Blood pressure, the pressure of circulating blood against the wall of the blood vessels. वह दाब the pressure of circulating blood against the walls of the vessels. Most of the pressures result from the heart pumping blood through the circulatory system. Circulatory system. Circulatory system. Now, there are two types of blood pressure. One, hypertension means more than requirement, and other hypotension मतलब लेस देन रिक्वायरमेंट. जब ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी को ब्लड सर्कुलेटिंग करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा होता है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं. जब ज़रूरत से कम होता है तो उसको हम हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं. हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर बोलते होते हैं. हाइपरटेंशन is an abnormal elevation of arterial blood pressure. If blood pressure is above 140 by 19, it is declared as hypertension. It can be classified into two types: primary or essential hypertension and secondary hypertension. Primary hypertension is characterized by elevations of diastolic blood pressure and increase in peripheral resistance. There are several factors which are responsible for primary hypertension. Genetic heredity, जिससे कि माँ बाप को जिसके पास ब्लड प्रेशर होता है उसके संतान में भी हाई ब्लड प्रेशर होने की चांस होता है. एन अदर टर्म ओबेसिटी, मोटापा. थर्ड, इंडोक्राइन डिसऑर्डर, हाई साल्ट इनटेक मतलब ज़्यादा लवण खाने के कारण. सिगरेट स्मोकिंग, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल. टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी, इंक्रीज इन सीरम एंड रेनिन लेवल. हाइपरसेंसिटिविटी ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम एंड स्ट्रेस, तनाव. Secondary hypertension. Secondary hypertension is due to some disorder like Cushing's syndrome, hyperthyroidism, or due to kidney impairment. Sign and symptoms of hypertension. Although headache is very common, जिसे मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, उच्च रक्तचाप होता है, उसको जो है सिर में दर्द होता है. बट constant headache, dizziness occur when diastolic blood pressure exceed 110 mm. Occipital headache in the morning is associated with severe hypertension. If renal failure occurs, heart problem becomes severe. Pathophysiology. Hypertension may cause damage of kidney. Hypertension किडनी के डैमेज होने. Hypertension may cause damage of kidney, eye, heart, brain. Hypertension किडनी, आँख, दिल और ब्रेन के डैमेज होने का कारण हो सकता है. Hypertension leads to the depositions of fibrin in glomerulus, which may lead the renal failure. Similarly it leads to the visual disturbance मतलब इसमें sight loss भी होता है. In hypertension, work imposed on the heart
is increased due to this load. Left ventricle deteriorates, leading the left ventricle failure. Thank you.